Good afternoon, all. We at G.H.G. Khalsa College of Education, Guru Sir Siddharth, and from our esteemed collaborating institutions, extend a warm welcome to all the participants in this faculty development program on open educational resources, a catalyst for innovations in education. We also welcome our esteemed resource person of the day, Dr. Mahesh Koltame. Before proceeding with the session one of this faculty development program, I would like to invite our IQAC coordinator, Dr. Manu Chadda, for exposing the theme of this faculty development program and formal welcome of all the participants and the resource person of the day. Thank you, Dr. Mini. The IQAC cell and the research cell of G.H.G. Khalsa College of Education, Guru Sir Sudhar, Ludhiana, organizes a faculty development program on the theme Open Education Resources, a catalyst for innovations in education. This faculty development program is in collaboration with the Council for Teacher Education Foundation and along with the collaborating institutions of G.H.G. Khalsa College of Education. The esteemed colleges, the collaborating institutions are Mayer College of Education, Jammu, Bombay Teachers Training College, HSNC University, Mumbai, Government College for Girls, Ludhiana, DAV College of Education, Abohor, AS College of Education, Khanna, Guru Tegh Bahadur College, Khalsa College of Education, Dasua, G.H.G. College of Education for Women, Sidhwa Khurd, and Innocent Hearts College of Education, Jalandhar. So on behalf of the management, principal, and faculty of G.H.G. Khalsa College of Education and all the collaborating institutions, I extend a heartfelt welcome to all the participants in this event. My special gratitude to all the principals and the IQAC coordinators of the collaborating institutions for accepting our invitation, our proposal, and acknowledging the willingness in participating and contributing towards the initiation of the event. Open education resources, as we call it as OER, it refers to freely accessible and openly licensed educational materials that can be used, shared, and modified. These resources basically include the textbooks, the lecture notes, videos, and other learning materials made available to the public. The aim of OER is to promote universal access to education and facilitate collaboration among the educators worldwide. The faculty development program on this topic, that is OER, serves as a dynamic platform fostering innovation and empowerment within the academic community. The FDP plan is so designed to equip the educators of our participating institutions with the knowledge,
skills, and strategies necessary to harness the potential of OER effectively. By promoting open access to education material, this FDP will basically aim to revolutionize teaching methodologies, enhance collaboration, and democratize education. The participants in this program will get an opportunity to explore diverse facets of OER, including the content creation, curation, licensing, and utilization. They can delve into the principles of open licensing, copyright issues, and ethical considerations surrounding OER adoption. Keeping all this in mind, we have formed the sub-themes of this FDP. Moreover, it will encourage and facilitate all of us to develop proficiency in locating, evaluating, and integrating high quality OER into their teaching practices, promoting adaptability and innovation in pedagogy. Through this collaborative effort, we intend to contribute to the culture of sharing and continuous improvement in academia. Ultimately, this FDP on OER aims to stand as catalyst for educational inclusivity, accessibility, and excellence. So, with this essence, today, with the grace of God, with the blessings of God, we initiate this event today with the first session by Dr. Mahesh Koltame. So I welcome you all and thank you for participating and making this event a success by showing a good participation. Thank you one and all. So now we can start with our event as Sir has already joined us. So I hand over the further proceedings to Dr. Mini. Thank you, ma'am. Well, in this ever-evolving landscape of education, it is imperative for us as educators to continuously enhance our skills, stay abreast of the latest pedagogical trends, and embrace innovative approaches to teaching and learning. Today's resource person, Dr. Mahesh, has come to us with a wealth of knowledge and experience, making him an invaluable asset to our journey of professional development. Before handing over this session to Dr. Mahesh Koltame, I would like to share vast achievement of Sir in a brief introduction. Dr. Mahesh is working as assistant professor at PVDT College of Education for Women, SNDT Women's University, Mumbai. Dr. Mahesh has also completed 3 minor research projects funded by Sarv Shiksha Abhiyan, Unit Trust of India, and State Women's Commission, Maharashtra. Along with these research projects, he has published 20 research papers, articles so far in various national and international journals. He has also contributed 4 chapters in an edited book, 3 chapters or units to ODL study material. Sir is member of Senate SNDT Women's University, member of BOS Education Swami Ramanand Tirath University Nanded, member of School Council, School of Online Learning, Yashwantru Chavan Maharashtra Open University Nashik. Sir has developed and deployed MOOCs and OER courses. Sir has been invited by the UNESCO Chair on Open Technologies for OER and Open Education. Sir has been awarded by the Best Research Presentation Award, including a state level award to cite a few. Sir, we welcome you. So your presence will surely add a tremendous value to our pursuit of academic excellence and professional growth, sir. So over to you now. Thank you, madam. Thank you for the introduction, and also I would like to thanks Principal Dr. Pargat Singarcha, who is my friend also, and one of the OER movement member. We can say the advocate of Open Educational Resource Movement. So thank you once again, all team of the your college, G.H.G. Khalsa College, Guru Sadar, and now we are going to start today's session. Wonderful
with the wonderful participants, because there are 98, more than 98 participants are there. So सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत सादर नमस्कार, और आप सभी का इस सेशन में मैं हृदय से स्वागत करता हूं, क्योंकि ये सेशन मेरे लिए खास है, क्योंकि ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस जो है इस मूवमेंट का, from the 2019 I have been associated with the Open Education for Better World mentoring program, and उस एसोसिएशन के साथ ही हम जुड़े हैं इस ओपन एजुकेशन मूवमेंट के साथ, और उसी का एक हिस्सा है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस। एंड उसलिए उस दृष्टिकोण से मेरे लिए ये सेशन खास है, क्योंकि वही मूवमेंट जो इंटरनेशनली चल रहा है, जिसका हिस्सा हम पिछले 3-4 सालों से है। आपके महाविद्यालय भी उसमें सक्रिय रूप से सहभागी है, आपके प्रिंसिपल सर के माध्यम से, और भी आपकी फैकल्टी जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं अपने सेशन शुरू करना चाहूंगा इसी के साथ, और उसके लिए मैं अपना जो स्क्रीन है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। Please allow me to share my screen. Host, please allow me to share my screen. Dr. Mahesh Koltame, you've been Yeah, made thank the you. co-host. Thank you very much. Screen, I can able to share the screen. Before we go ahead, we will do one warm-up activity. Later on, we'll go with the presentation. Here is a warm-up activity. You people are really like to do this activity. Activity is suggest any 3 kind of educational resources that improve the educational processes and facilitates learning. तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए for the responses. हेलो, मेरी आवाज आ रही है ठीक से? Yes, sir. Yes, you're audible. ओके, ठीक। Just a minute, I'll share the link. Are you able to see the screen? Join at menti.com, use code 16397340, and this is the code to respond this question. Question is, suggest any 3 kind of educational resources that improve the educational processes and facilitates learning. शैक्षिक प्रक्रियाओं और अध्ययन को अधिक बेहतर बनाने के लिए और अध्ययन को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए उपयुक्त किन्हीं 3 शैक्षिक संसाधनों का जो हम अपनी कक्षा में उपयोग करते हैं, उसका आपको उस मिंटीमीटर पर जाकर आपको रिस्पॉन्स करना है। लिंक मैंने उसके लिए आपके साथ शेयर कर दी है। चार्ट में आप लिंक देख सकते हैं। क्लिक ऑन दैट लिंक and record your response. I am waiting for your responses. Yes, we got first response PowerPoint presentation. Okay. We can say it a PPT. Okay. Google Classroom. Okay. Google Doc. Yes. We are using Google Doc. There are more than 100 participants.
at least 50% participants should attend this activity. YouTube, there is a new response like a YouTube. Yeah. YouTube video. Correct. Okay. LMS. ठीक है, हम LMS भी उपयोग करते हैं. Only 3 responses I have got till. If you people are not able to record your responses, then say me or reply in chat box. Shall I wait or go ahead? Only 3 responses we got for this activity. No problem. आप लोगों को टेक्निकली इश्यू होगा, आप मोबाइल में काम कर रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड. Biographies, okay, we can refer biographies as an educational resource, definitely, and that will be helpful for enrichment of learning. Please someone add the participants who are requesting to join. Okay, thank you very much for the responses. You can give your responses later on also. This is our today's topic, open educational resources, and in this session हम देखेंगे कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्स क्या है, किसे कहते हैं और क्यों ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस इंपॉर्टेंट है. और ये जो वार्म अप एक्टिविटी है, आपने रिस्पॉन्स किया होगा, नहीं भी किया होगा, आपने मन में भी सोचा होगा, तो दैट इज फाइन. कोई भी 2-3 रिसोर्स आप अगर सजेस्ट कर पाते हो, लाइक वीडियो है, पिक्चर्स है, इन्फोग्राफ्स है, या फिर ई बुक्स है, बायोग्राफीज है, there are n number of resources that we can use in our class or in our teaching learning process to make our teaching learning more effective and facilitate the students learning. Thank you very much for your responses. And the today's outcome of the today's sessions, at the end of this session you are expected to be able to define open educational resource concept, then give an overview of international development related to the open educational resource movement, and finally third is identify open educational resources. This is the target of the session, and to meet this target or the outcome, we have a session outline, like we will discuss the concept of open education, then definitions of open educational resources, third is development of the open movement, and fourth, need for open educational resources, benefits of open educational resources, and finally we will discuss in brief merits and challenges of using open educational resources. This is our session agenda for today.
First, we'll discuss the concept of open education. What is meant by open education? Because open educational resources are the one of the component of open education movement. Opening up and sharing knowledge is necessary if we are going to solve the world's most pressing challenges. जो भी आज के समय की जो challenges है, अगर हम बात करें 21st century की, तो ये समय टेक्नोलॉजी का है, ये समय है इंटरनेट का, ये समय है ओपन मार्केट है, जिसको हम कहते हैं कि वर्ल्ड इज ओपन नाउ फॉर द मूवमेंट, शेयरिंग एंड आल्सो द मार्केट पर्पज से भी जग खुला हुआ है। उसी वक्त जियो पॉलिटिकल इश्यूज भी वहां पर है, उसी वक्त ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज भी हम देख रहे हैं। तो इट्स अ वेरी डायनामिक काइंड ऑफ नेचर इन कंटेम्प्ररी टाइम। तो कंटेम्प्ररी जो समय है, आज का जो समय है, वो बहुत ही गतिमान तरह का समय है, जहां पर हर दिन अपनी जो समस्याएं हैं वो बदल रही है, समय की मांग जो है बदलती रहती है। जो हम 90s के पहले वाले दुनिया की कल्पना करते, जो कंपैरेटिवली स्लो थी, वो आज नहीं। सो द नेचर ऑफ 21st century इज अ वेरी डायनामिक एंड सिचुएशन इज प्रेसिंग चैलेंजेस। यहाँ जो चैलेंजेस है वो बहुत उनका दबाव हमारे ऊपर बढ़ रहा है, और इन सभी चैलेंजेस को मीट करने के लिए अगर एवरी डे देयर इज अ समथिंग न्यू, इन दैट केस वी हैव टू लर्न every day, because if we want to deal the new issues, new challenges successfully, in that case we have to learn new things to meet the requirement of the time. In that case, it is very essential to learn continuously. Lifelong learning is essential. Self-learning. And in that context, education should be open. जो अर्लियर कन्वेंशनल स्ट्रक्चर था, वो डिग्री देने वाला जो स्ट्रक्चर था, वो स्ट्रक्चर जो है वो आज के समय में उतना सफल नहीं होगा, क्योंकि जब हम ग्रेजुएट्स हो चुके होंगे तब जो हमने सीखा था वो काम नहीं आएगा, या फिर कुछ ऐसी समस्याएं हमारे सामने हो सकती है जिसको सॉल्व करने के लिए हमें नया कुछ सीखना पड़ेगा। दिस इज द सिनेरियो ऑफ कंटेम्प्ररी टाइम, एंड इन दिस केस देयर इज द नीड ऑफ लर्निंग एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये है बहुत बढ़ गई है। उसका जो औचित्य है लाइफ लॉन्ग लर्निंग का, वो बहुत काफी मात्रा में बढ़ चुका है कंपेयर टू द पहले वाले समय से। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग करना है तो लर्निंग शुड बी ओपन। लर्निंग के लिए संसाधन अवेलेबल होने चाहिए, फ्री में वो चीजें अवेलेबल हो, आसानी से वो चीजें अवेलेबल हो, सीखने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो आसानी से अवेलेबल हो, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग पॉसिबल है। उसके साथ ही सभी लोग शिक्षित होना भी जरूरी है, क्योंकि आज का जो समय है उस समय में तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, अगर हम लर्नेड है, तो सीखे हुए, हमारा ज्ञान हमारे पास है, तो शिक्षा है। तो और उस दृष्टिकोण से देखे तो एजुकेशन फॉर ऑल और जनरलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, तो एजुकेशन हर तबके तक पहुंचना चाहिए, हर कोई शिक्षित होना जरूरी है, ये समय की मांग। और अगर वो शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो समय के साथ नहीं टिक पाएगा। इस परिदृश्य पर ओपन एजुकेशन एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से हम सीखने के दरवाजे सभी के लिए खुले कर सकते हैं। और उसके 3 अलग अलग अंग है, प्रमुख अंग है, जिसमें शुरुआती अंग जो था ओपन कोर्स वेयर्स, जिसमें सारे ओपन यूनिवर्सिटी जो है उसी के लिए काम करते हैं कि उन्होंने जो अपने कोर्सेस है, जो अभ्यासक्रम है, उसका उन्होंने सेल्फ स्टडी मटेरियल बनाया, सेल्फ स्टडी कंटेंट बनाया, और आप जिस भी परिस्थिति में हो, जहां भी हो, जहां से भी हो, तो आप मुक्त रूप से सीख सकते हो। तो ओपन यूनिवर्सिटीज आर preparing open courseware, and they are offering their courses and course contents for the lifelong learning purpose, and also कि जो लोग रेगुलर शिक्षा की व्यवस्था में नहीं आ सकते उनके लिए। और दूसरा जो छोर है ओपन एक्सेस, OA जिसको हम कहते हैं, इट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द रिसर्च रिलेटेड कंटेंट। तो रिसर्च कंटेंट जो है, रिसर्च जर्नल है, पीयर रिव्यूड जर्नल्स हो या फिर रिसर्च डेटाबेसेस हो, तो ये जो कंटेंट है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द लर्निंग पर्पस आल्सो एंड फॉर द डेवलपमेंट पर्पस आल्सो।
तो वो कंटेंट भी फ्रीली ओपनली अवेलेबल हो फॉर द कॉमन पीपल, जो भी सीखना चाहता है उसके लिए. दिस इज वन पार्ट. And in the between the two things, there is a open educational resources. The concept is a very popular nowadays. बहुत popular है, तभी तो एक पूरा FDP हम open educational resources पर कर रहे हैं. So in that case, we can say the open courseware OCW, OER, open educational resources, and open access. Open access specifically refers to the journals and research related materials, databases, etc. So now what is the concept of open educational resources? Because our today's main agenda is OER. So OER क्या है? Open educational resources, in short we can say open OER, are teaching, learning and research material. Please highlight these three things. ये क्या है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज? तो इट इज अ मटेरियल which is related to the teaching, learning and research that are either in a public domain or a licensed in a manner that provides everyone with free and perpetual permission to engage in the 5 R's activity. अब इसको समझना जरूरी है. ये दो चीजें, एक तो ये पहली चीज क्या है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस. ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस आर मटेरियल दैट इज यूजफुल फॉर टीचिंग, लर्निंग एंड रिसर्च. तो ये मटेरियल किस फॉर्म में हो सकता है? इट इज मे बी अवेलेबल इन अ पब्लिक डोमेन. इट मीन्स कि बिना किसी कॉपीराइट के पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है. मतलब जैसे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के, या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन की जो कोई भी उसके ऊपर अधिकार नहीं बता रहा है, इट इज इन पब्लिक डोमेन. तो उस तरह का कंटेंट है जो अवेलेबल है. हमारा जो गैजेट ऑफ भारत सरकार का है उसमें जो इंफॉर्मेशन आती है दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन पब्लिक डोमेन इंफॉर्मेशन. या यूजीसी ने भी बहुत सारा कंटेंट जो है पब्लिक डोमेन में रखा है. गवर्नमेंट्स अपनी अपनी चीजें, इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक डोमेन पब्लिक डोमेन में है तो उसका हम उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में है और कोई कॉपीराइट्स उसके लिए लिया नहीं है. तो we can consider it as a open educational resources, and then license in a manner that provides everyone with free and perpetual permission. मतलब क्या है? कुछ ऐसे रिसोर्सेस है जिनको जिनको राइट तो लिए है, किसी के पास उसके राइट है, बट उस राइट के साथ उन्होंने इस तरह का लाइसेंस उस रिसोर्स के लिए यूज किया है जो हमें परपेचुअल परमिशन देता है, उसके यूज करने की परमिशन देता है विद सम कंडीशन और लेस लिटिल कंडीशन के साथ, स्मॉलर कंडीशंस के साथ वो देते हैं. और वो किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? वो लाइसेंस के साथ परमिशन किसे दे रहे? एवरीवन विथ फ्री एंड परपेचुअल परमिशन. वो फ्रीली अवेलेबल है. also perpetual permission is there, means उस लाइसेंस में उसके उपयोग के संबंध में कुछ परमिशंस हमें दी हुई है. there are very few restrictions, but the author or a creator herself or himself has given a perpetual permission to engage in the 5R activities. What is mean by 5R activities? जो भी कंटेंट कोई ऑथर ने डेवलप किया है और वो लाइसेंस, ओपन लाइसेंस के साथ उन्होंने पब्लिक डोमेन में रखा है या उपलब्ध कराया है हमारे लिए उपयोग करने के लिए, डिजिटली भी हो सकता है. और पहले इनिशियली डिजिटली मानते थे, बट नाउ वी कैन कंसिडर हार्ड बाउंडेड कंटेंट आल्सो. तो उसमें 5R एक्टिविटीज क्या है वो समझने वाली चीज है. रिटेन मीन्स जब हम कोई कंटेंट, कोई रिसोर्स, वो चाहे वीडियो हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो क्विज हो, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो इन्फोग्राफ हो, या चाहे कोई रिसर्च पेपर हो, या कोई हम कहते हैं ना डिजाइन हो, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन काइंड ऑफ थिंग्स,
या मॉडल्स हो, तो उनको रिटेन करना, मेक एंड डाउन अ कॉपी, तो अपने उपयोग के लिए उसकी कॉपी अपने पास सेव करके रखना विदाउट एनी पेमेंट, विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन। अगर हम कर पाते हैं, रिटेन कर पाते हैं दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, कंटेंट और रिसोर्स, दिस एक्टिविटी अगर उसमें है, तो वी कैन से वो एक ओपन एजुकेशन रिसोर्स हो सकता है। देन रीयूज, इस तरह की परमिशन है। पहले तो रिटेन करने की, कोई भी रिसोर्स डाउनलोड करो, अपने पास अपने उपयोग के लिए रखो, ये परमिशन है। देन रीयूज मतलब क्या है? यूज इन अ वाइड रेंज ऑफ वेज। जो रिसोर्स मैंने डाउनलोड किया है, वो रिसोर्स भले किसी एक और पर्पस के लिए बना हो, वो चाहे ईपीजी पाठशाला के किसी पीजी के कोर्स के लिए बना हो, लेकिन मैं उसको डाउनलोड करके आई कैन यूज दैट पर्टिकुलर रिसोर्स in my context, in my class also, in a B.Ed class. It means I'm using that resource in a wide, in a different way and different purpose. तो different purpose के लिए और different way में क्या है? reuse का मतलब क्या है कि उसको दूसरे परिदृश्य में उपयोग में लाने की मुझे परमिशन है, और दूसरे मकसद के लिए भी उसे मैं अपने ला सकता हूँ। कई बार लोग, इसके लिए मैं उदाहरण दूंगा, जब हम कोई रील बनाते हैं और रील के साथ गाना जोड़ देते हैं, अभी वो गाना अगर फ्रीली अवेलेबल है और हमने लाइसेंस, मतलब इफ द ओनर ऑफ दैट काइंड ऑफ कंटेंट, सॉन्ग का ओनर अलाउ कर रहा है, इन दैट केस नो प्रॉब्लम, और द ऐप हैज सब्सक्राइब्ड, सारा कंटेंट सब्सक्राइब किया है तो ऑथोराइज है, तो वो कर रहे हैं। तो एक नया रील बनाया और पुराना वाला कोई गाना उस रील के साथ जोड़ना, इट इज काइंड ऑफ रीयूज टाइप ऑफ थिंग। तो इस तरह से हम कोई कंटेंट रीयूज भी कर सकते हैं। तो 3R एक्टिविटीज करने को परमिशन मिली है। कौन सी? रिटेन करने को, रीयूज करने को, देन रिवाइज, अडॉप्ट, मॉडिफाई एंड इंप्रूव। कोई टूल है मान लीजिए, या कोई रूब्रिक है, असेसमेंट रूब्रिक हमें मिला है, बट द रूब्रिक जो डेवलप किया है वो अमेरिका, स्वीडन, इनके देश के कॉन्टेक्स्ट के अनुसार बनाया हुआ है। तो हमारे यहाँ एज इट इज वो यूजफुल नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? वेन एवर रिक्वायर है, जहां जहां रिक्वायरमेंट है, वहां वहां हम चेंजेस करेंगे। चेंजेस क्या हो सकते हैं? वी कैन कन्वर्ट देम इनटू अ लोकल लैंग्वेज, उसका ट्रांसलेशन करना, उसमें कुछ लोकल कॉन्टेक्स्ट एग्जांपल्स ऐड करना, पार्शियली कोई कंटेंट को यूज करना, तो ये रिवाइज की कैटेगरी में आता है। तो सोर्स इटसेल्फ permits revision in that particular source. Then remix, combine two or more, अलग अलग दो रिसोर्स, डिफरेंट लोगों के दो रिसोर्स एक साथ मिक्स करके तीसरा रिसोर्स बनाना। सेम काइंड ऑफ रूब्रिक्स में हो सकता है, या इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है। वो खान एकेडमी पर मुझे कोई इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मिला साइंस के टॉपिक के लिए, और कहीं और दूसरा एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मिला, तो दोनों डिजाइन में कुछ चीजें उसमें अच्छी है, कुछ चीजें इसमें अच्छी है, तो दोनों में से वो जो रिक्वायरमेंट, मेरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकता है, मेरे टारगेट आउटकम को मीट करने के लिए यूजफुल है, दैट पार्ट और दैट पोर्शन अगर मैं एक कर रहा हूं, इट कम्स अंडर द रीमिक्सिंग। हम उसमें कुछ और मिक्स कर रहे हैं, एडिशनल कंटेंट दे रहे हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि क्विज, जहां हम देखते हैं जैसे H5 पे में हम वीडियोस, जो यूट्यूब पर वीडियो जो अवेलेबल है, उन वीडियोस में हम रिफ्लेक्टिव स्पॉट्स देते हैं, उसमें कुछ कंटेंट मिक्स करते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो रीमिक्सिंग की कैटेगरी में आता है, कि वो ओरिजिनल कंटेंट का हिस्सा नहीं है, आपने उसको क्या किया है? रीमिक्स किया है, आपने उस कंटेंट के साथ दूसरा कोई कंटेंट उसमें ऐड किया है, इट कम्स अंडर द रीमिक्सिंग काइंड ऑफ। And last and very important is redistribute. Open educational resources allow us to redistribute, तो share with others. तो कोई भी ओपन एजुकेशनल रिसोर्स अगर हमारे पास है, तो वी कैन फ्रीली, बिना डरे, बिना हिचकिचाए, हम दूसरों को शेयर कर सकते हैं, विद आवर स्टूडेंट्स, विद आवर कम्युनिटी, विद आवर फैमिली मेंबर्स, जो जिस किसी को
है और उसकी 50 जेरोक्स बनवा कर बेचेंगे या उसकी डिजिटल बनवा के सर्कुलेट करेंगे, इन दैट केस इट कम्स अंडर द ऑफेंस, ये कानूनन अपराध कहलाएगा। तो कानून उसके अलाउ कर, लीगली हमें वो अलाउ नहीं है। बट in the context of open educational resources, resource itself give us a permission or a perpetual permission to redistribute it. तो ये जो परमिशंस है 5 आवर्स एक्टिविटीज अलाउ करता है रिसोर्स itself by its license, we can say the source is open educational resource. Am I clear? Then there are a few definitions which are definitely useful to understand the to make deeper understanding about the open educational resource. The first definition is the William and Flora Hewlett Foundation. At Hewlett's, they are using the term open education to encompass the myriad of learning resources, teaching practices, and educational policies that use the flexibility of OER to provide learners with high quality educational experiences. इसलिए वो यूज करते हैं वो बता रहे हैं। देन द पर्पस उन्होंने क्लियर किया। Then Creative Commons defines OER as a teaching, learning, and research material. As I already said, open educational resources are basically related to teaching, learning, and research related activities. So research materials that are either in the public domain or be licensed in a manner that provides everyone with free and perpetual permissions to engage in the 5R activities, retaining, remixing, revising, reusing, and redistributing the resources that we had already discussed thoroughly. Then the second definition is also very important, and that is OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, defines the open educational resources. Digitalized material, they have mentioned specifically material kind of digitalized. Digitalized materials offer freely and openly for educators, students, and self-learners to use and reuse for teaching, learning, and research. Again, teaching, learning, and research is highlighted here. OER includes learning content, software tools to develop, use, and distribute content and implementation resources such as open license. तो open license के साथ क्या क्या हो सकता है? लर्निंग कंटेंट हो सकता है, सॉफ्टवेयर टूल्स टू डेवलप, तो सॉफ्टवेयर के टूल्स हो सकते हैं जो लर्निंग कंटेंट डेवलपमेंट के लिए यूज हो, या केवल टूल, और उसके संबंध में उसके उपयोग, डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन रिसोर्सेस, इसको परमिट करने वाले जो रिसोर्स है उनको हम क्या कह सकते हैं? ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, OER कह सकते हैं। Only thing is here, digitalized material को उन्होंने कंसिडर किया। According to OECD, they are considering digitalized material. We will see the more definitions. And यूनेस्को ने ओपन एजुकेशनल रिसोर्स को डिफाइन करते वक्त कहा है, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसर्च, द कॉमन फैक्टर इज सेम, द रिसोर्स इज रिलेटेड टू टीचिंग, लर्निंग एंड रिसर्च इन एनी मीडियम, digital or otherwise. Here you can see the difference between earlier definition and this definition. These definitions cover digital and non-digital material also in the category of open educational resources. And any medium, किसी भी माध्यम में हो सकता है, पिक्चर के माध्यम में हो सकता है, वॉइस के माध्यम में हो सकता है, विजुअल्स के, एनिमेशंस के, सॉफ्टवेयर्स के, तो any medium, digital or otherwise, that reside in the public domain, या तो वो public domain में available है, or have been released under an open license that permits no cost access, तो उसके एक्सेस के लिए उसने परमिशन दी है और उसको कोई कॉस्ट नहीं है, या कोई उसके अगेंस्ट कुछ पे नहीं करना है, कोई कमिटमेंट नहीं है,
पे हर बार ये नहीं लेना है कि वो पैसे के रूप में हो। अगर कोई कमिटमेंट है या कोई टर्म कंडीशन है तो हम उसको भी कह सकते हैं कि देयर इज some restrictions in access. So no cost access, use, adaptation and redistribution by others with no or limited restrictions. So it may be a no restriction or a limited restrictions. तो limited restrictions क्या है? There is a different 6 kind of licenses जिसमें कुछ लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस देते हैं, जैसे नॉन कमर्शियल यूज। अगर रिस्ट्रिक्शन की बात करें लाइसेंस में, तो जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्स क्रिएटर है वो इस तरह का लाइसेंस दे सकता है कि कह सकता है कि मेरा रिसोर्स यूज करके कोई पैसे ना कमाए, कोई उससे फाइनेंशियल अर्निंग या जिसको हम कह सकते हैं ना कमाई ना करे, तो उस तरह का रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। या फिर रिस्ट्रिक्शन जैसे शेयर अलाइक, जैसे है वैसे शेयर करने का रिस्ट्रिक्शन। तो इस तरह के स्मॉल या लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन के साथ भी इस तरह के रिसोर्सेज जो है वो उपलब्ध हो सकते हैं, और इन सभी को अकॉर्डिंग टू यूनेस्को वी कैन से द ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस। Then one more definition is there, and this is given by the Cape Town Open Education Declaration. According to Cape Town Open Education Declaration, open educational resources should be freely shared through open license. ये कैसे शेयर किए हुए हैं? Freely shared. There is no restriction, no condition, no financial binding. Shared through open license, खुले लाइसेंस के साथ। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस को हम ओपन लाइसेंस कहते हैं। जो 6 कैटेगरी के लाइसेंसेस है, जो आप, मुझे लगता है आने वाले सेशंस में आप उसके बारे में बेहतर ज्यादा सीखेंगे। तो इस तरह के लाइसेंस के साथ शेयर किया हुआ है, विच फैसिलिटेट्स, वो लाइसेंस की मदद क्या होगी? विच फैसिलिटेट use, revision, translation, improvement and sharing by anyone. Resources should be published in a format that facilitate both use and editing, and that accommodate a diversity of technical platforms. Technical platform means Word, PDF, अलग अलग जो फॉर्मेट्स होते हैं टेक्निकल, तो वो फॉर्मेट को भी अकोमोडेट करने वाले इस तरह के रिसोर्सेस होने चाहिए। दिस इज द different kind of component which has considered by the Cape Town Open Education Declaration. Whenever possible, they should also be available in format that are accessible to people with disabilities and people who do not yet have access to the internet. तो यहाँ और एक important चीज उन्होंने जोड़ी है कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस है, जहां तक संभव हो वो जो लोग मतलब नॉर्मल नहीं, मतलब ब्रेल में भी, ब्रेल लिपि में कुछ रिसोर्सेस अवेलेबल हो, या फिर लोकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो लोकलाइजेशन, इंग्लिश में रिसोर्स है बट दोज हु आर लैंग्वेज उनके पास वो नहीं है, इंग्लिश के पास नहीं है, उनके लिए भी मल्टीलिंगुअल फॉर्म में रिसोर्सेस अवेलेबल हो। Those who are not able to access this resource in a particular form, they should also use these resources, and for that purpose make a resources in such a manner. और जिनके पास इंटरनेट नहीं है वो भी उसका उपयोग कर सके। इसके लिए हम कह सकते हैं कि ऐसे रिसोर्सेज जो डाउनलोडेबल है, वी कैन डाउनलोड देम एंड ऑफलाइन जाकर हम उसका उपयोग कर सके। इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, प्रोग्राम्स या फिर पीडीएफ फॉर्म में रिसोर्सेस होते हैं, तो उसका उन सभी को हम ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस कंसीडर कर सकते हैं। OER कॉमन्स ने ओपन एजुकेशन रिसोर्स को डिफाइन करते हुए कुछ चीजें कही है, जैसे ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस आर टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स दैट यू मे फ्रीली यूज एंड रीयूज। यूज, रीयूज, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। आप बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के उसको यूज कर सकते हैं, फ्रीली यूज कर सकते हैं, बिना पेड किए उसको यूज कर सकते हैं, एंड रीयूज कर सकते। एक बार नहीं, आप अलग 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 परिस्थिति में अलग अलग तरीके से उसको यूज कर सकते विदाउट चार्ज, मतलब कोई उसको चार्ज नहीं। We are often have a Creative Commons और JNU लाइसेंस। JNU लाइसेंस जो होता है खास करके जो सॉफ्टवेयर्स एंड जो इस तरह का जो मटेरियल है उसके लिए होता है। Often have a Creative Commons or JNU license that states specifically how to
how the material may be used, reused, adopted and shared. तो जो लाइसेंस होता है वो लाइसेंस हमें ये बताता है कि उस मटेरियल को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, किस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं और किस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. दे आर अलाउइंग यूज, reuse, adaptation and sharing only with restriction, some restriction or a little restriction. उन्होंने उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जब वो लाइसेंस कंपोज करते हैं दैट टाइम दे मेंशन. Then the recommendation of open educational resources 2019, this is the most recent kind of document. Open educational resources, OER, are learning, teaching and research material in any format and any medium that reside in a public domain or are under copyright that have been released under the open license, that permit no cost access, reuse, repurpose, adaptation and redistribution by others. Repurpose का मतलब क्या है? किसी और मकसद के लिए उसको उपयोग करना, दूसरे परिस्थिति में, परिदृश्य में उसका उपयोग करना, इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट उस रिसोर्स का यूज करना विद द नेसेसरी चेंजेस और नेसेसरी मिक्सिंग के साथ मिक्स करके या रिमिक्स करके उपयोग करना, तो उसको हम रीपर्पसिंग कह सकते हैं. हाँ, व्हाट आर द की फीचर्स? सभी डेफिनेशंस देखने के बाद कुछ कॉमन फैक्टर्स ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस में है. एक तो इट मे बी इन अ पब्लिक डोमेन. अगर वो पब्लिक डोमेन में है, कोई कॉपीराइट नहीं बताया है, तो वो तो है ही. जैसे वेद है, हमारी ऐतिहासिक परंपरा में वेद जो है वो अपौरुषीय है. मतलब क्या है? कोई भी उसका रचयिता नहीं है. देयर इज नो ऑथर ऑफ वेदास. इट मीन्स दे आर इन पब्लिक डोमेन, तो वो सारे पब्लिक की ओनरशिप उसके ऊपर है. इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, द पब्लिक ओनरशिप काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत प्राचीन समय से भारत में रही है. और उस दृष्टिकोण से मैं ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस की जो ये मूवमेंट है उसके संदर्भ में अगर भारत के दार्शनिक रूट्स की तरफ जाए तो हम पाते हैं कि भारत में नॉलेज के ऊपर, एजुकेशनल रिसोर्सेस के ऊपर ओनरशिप नहीं बताई गई. जो नॉलेज होता है वो अपौरुषीय मानते हैं. तो उसी दृष्टिकोण से वो सबके लिए फ्रीली अवेलेबल होता है. उसको पैसा चार्ज करना मतलब अच्छी बात या उससे पैसे कमाना, ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं था. तो सम काइंड ऑफ ओपन एजुकेशनल थॉट्स के रूट्स जो है हम हमारे रूट्स में देखते हैं. बट द मॉडर्न कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट काइंड ऑफ concept, more scientific, more technically clear kind of concept. This is the open educational resources, and there are three major requirements of every open educational resource. One is open copyright license required, means creative common license is a required. CC license उसको होना ही चाहिए. दूसरा है right of access, adaptation and publication should be there. अगर इनमें से कोई भी एक राइट नहीं है तो हम उसको ओपन एजुकेशनल रिसोर्स नहीं कह सकते. देन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी राइट्स गिव्स टू एवरीवन एवरीवेयर. अभी इसमें हम कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेटरी मीन्स केवल भारतीय लोगों के लिए ओपन है, ऐसा नहीं चलेगा. केवल हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए ओपन है, ऐसा नहीं चलेगा. केवल हमारी स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए रिसोर्सेज ओपन, ऐसे नहीं चलेगा. तो रिसोर्स शुड बी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी और वो सभी के लिए अवेलेबल हो इररिस्पेक्ट ऑफ कंट्री, लैंग्वेज, कास्ट, ग्रीड, कोई कैटेगरी, कोई निर्बंध नहीं. ओनली कंडीशन इज इफ यू हैव अ इंटरनेट एक्सेस देन यू कैन एक्सेस द रिसोर्स. तो इस तरह से नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नेचर उनका होना चाहिए. और ये तीन कंडीशन जो भी रिसोर्स फुलफिल करता है, वी कैन से complete or partially the resource is open educational resource. Let's check your learning. What does OER stand for? बस आप अपने चार्ट में लिख सकते हैं कि आपको करेक्ट आंसर क्या है. It is kind of activity which checks your learning and attention. So please give a right option in chat. All three questions you can write 1 dash correct option, 2 dash correct option and 3rd dash correct option.
OER is the subset of term. किस term का subset है वो? And the third is the term free means the same. Just a minute. Free means the same as open. Is it true or false? Please reply. In chat box. होप कि chat box यूज करने में आपको दिक्कत नहीं. कर रहे हैं आप लोग? Question 1, 2, correct. OER is the subset of the term. OER ये किस मुख्य टर्म का एक हिस्सा है? ओपन एजुकेशन टर्म का सबसेट है, ओपन कोर्सवेयर का सबसेट है, ओपन एक्सेस का सबसेट है या ओपन सॉफ्टवेयर का? सॉरी, वन. ओके ओके. We got very few responses, but among them many are correct. For question 3, the term free means the same as open. मुफ्त है इसका मतलब ओपन है, ऐसा हो सकता है क्या? If yes, then true. If no, then false. मुफ्त का मतलब ओपन है ऐसा होगा. In the pandemic time, many organizations or many professional organizations release their content freely, like Coursera and many other organizations. Softwares also there are available in that time. It means they had declared their content as open source. Think again, because many of you question 3A, true. I'm discussing the same thing. We have to rethink about that. Question 3B, correct. क्योंकि क्वेश्चन 3A नहीं हो सकता है, क्योंकि ओपन मीन्स not only associated with the cost or money. It is associated with in a large view, like वो पैसे के मामले में तो फ्री हो ही. Along with that, there should not be a conditions. मतलब वहां बहुत ज्यादा conditions ना हो, रिस्ट्रिक्शंस उपयोग के ना हो, जैसे कास्ट के, ग्रीड के, नेशन के. अगर इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, कम्युनिटी वाइज रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं, in that case we can't say the source is open. हमारा फला कंटेंट जो लोग डाउनलोड करेंगे उन्हीं के लिए फ्री अवेलेबल है. इसका मतलब वो जो अवेलेबल है that is not a open resource. There is a condition. You have to access this resource. Before that, you have to buy something from our basket. After that, you can access this resource freely. That's why such things are there. इसलिए हम फ्री टर्म को ओपन के जैसे नहीं मान सकते, उसको ओपन रिसोर्स के रूप में नहीं कह सकते. थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स. नाउ वी आर हम देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ द ओपन एजुकेशनल मूवमेंट क्या रहा. हियर इज अ टाइमलाइन. ये जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस एंड ओपन एजुकेशन मूवमेंट है, ये बहुत पुरानी मूवमेंट नहीं है. ये बहुत
नजदीकी समय में इस तरह की जो मूवमेंट चली है, इसका जो लाइफ है करीब करीब 2 दशकों का लाइफ है, क्योंकि हम 2023 में जी रहे हैं। 2000 से ये मूवमेंट सही रूप में आकार में आई थी। इसकी शुरुआत हुई 1999 से। द यूनिवर्सिटी ऑफ टर्बिंगन जर्मनी एंड द ओपन यूनिवर्सिटी यूके रिलीज सम एजुकेशनल रिसोर्सेज फॉर फ्री। इन्होंने, इट्स इनिशियल स्टेज, बहुत शुरुआत है ये, कि ये दो यूनिवर्सिटी ने क्या किया, तो उनका ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज जो थे उनको उन्होंने फ्रीली अवेलेबल किया, रिलीज किया। और दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द ओपन एजुकेशन। Then in 2001, the Massachusetts Institute of Technology, जिसको हम बहुत पॉपुलरली जानते हैं, MIT, takes an OER initiative। और 2001 में MIT ने डिसाइड किया कि हम कुछ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स बनाते हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल होंगे, जो यूज रीयूज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस को अलाउ करेंगे। और अकॉर्डिंग टू दैट initiatives, in 2002 MIT released 32 courses with open license। MIT ने क्या किया, उसी पॉलिसी के अनुसार 2002 में 32 कोर्सेस उन्होंने लॉन्च किए विथ ओपन लाइसेंस एंड सेट ऑफ प्रेसिडेंट इन टर्म ऑफ ओपननेस ऑफ यूनिवर्सिटी कोर्सवेयर। जो यूनिवर्सिटी पहले कोर्सवेयर प्रोवाइड करते थे, उस दिशा में उन्होंने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया और उन्होंने 32 कोर्सेस ओपन लाइसेंस के साथ अवेलेबल कराया। दिस इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट माइलस्टोन in the development of open educational resource content. Taking note of this development, UNESCO conveyed the forum of impact of open courseware on higher education in a developing countries in 2002, where the term open educational resource was coined. Since then, many other educational service providers around the world have used open license and the internet to share teaching and learning resources. This is the very important early milestone in this field. Then in 2008, the Cape Town Educational Declaration was there. The Cape Town Education Declaration provided guidelines and encouragement for government to release educational resources, especially those created using public funding with open license. And this is also a very important step, क्योंकि जो सरकारी पैसे से जो रिसोर्स डेवलप होते थे वो एटलीस्ट ओपन रिसोर्स के मामले में आए, बिकॉज द रिसोर्स आर जनरेटेड विद द पब्लिक फंड, सो पब्लिक कैन फ्रीली यूज इट। और इसी प्रिंसिपल, इसी इथिकल आर्ग्यूमेंट के बेस पर केप टाउन एजुकेशनल डिक्लेरेशन ने ये अपील सभी गवर्नमेंट्स को किया, उस तरह का डिक्लेरेशन में प्रावधान किया कि गवर्नमेंट जो पब्लिक फंडिंग के द्वारा रिसोर्स डेवलप होंगे, एटलीस्ट उनको ओपन लाइसेंस के साथ सभी के लिए अवेलेबल करा। देन 2010 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफर्स इट्स फर्स्ट मूव। तो 2010 का जो साल है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और मूक इनसे संबंधित है। द टर्म ऑफ ब्रॉडिंग इन द रीच टू एजुकेशन, ब्रॉडनिंग मीन्स एजुकेशन जो है बहुत मैसिव लेवल पर पहुंचाने की दृष्टिकोण से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2010 में ऑफर द फर्स्ट मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स मूक, जो आज बहुत पॉपुलर टर्म है इन आवर कंट्री, attracting hundreds of thousands of students for a free course. The MOOCs phenomena has grown and now includes offering from many education service providers like a Coursera, Swayam, NPTEL, etc. to different MOOC platforms. While MOOCs continue to attract both praise and criticism, the concept still interested education experts, especially those developing strategies to support very large number of students. और जो MOOC जो है ये एक important milestone रहा ओपन एजुकेशनल रिसोर्स में, क्योंकि MOOCs डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है और कंटेंट जो है MOOC के लिए यूज एंड रीयूज का जो हम बात करते हैं उसके लिए यूजफुल है। और उसकी वजह से ये मूवमेंट सही मायने में स्केलेबल हो सकी है, वो बड़ी है, कई गुना बढ़ पाई है।
And 2012 is also important. The 2012 OER Paris Declaration is a very important milestone in this regard. The Paris Open Educational Resource Declaration provides guidelines and encouragement for government to release educational resources, especially those created using public funding with open license. Same Cape Town Declaration को यहाँ repeat उन्होंने किया है. The integration of OER into national policy is an ongoing and slow process, but there have been success in countries like the USA, South Africa, Kenya, Ghana, Poland, the Netherlands, and the United Kingdom, and now India also. It is in a leading type. In 2017, Year of Open Education has been celebrated internationally. The International Open Education Community celebrated 2017 as the Year of Open Education, and the UNESCO organized the second World OER Congress that adopted the Ljubljana OER Action Plan and released the ministerial statement that at the Congress. और आपको मैं बताते हुए खुशी है कि ये लुब्लिना ओईआर एक्शन प्लान के आउटकम के रूप में जो प्रोजेक्ट स्लोवेनिया में शुरू हुआ, ओपन एजुकेशन फॉर बेटर वर्ल्ड ऑनलाइन मेंटरिंग प्रोग्राम, और उसी एक्शन प्लान का वो प्रोग्राम है जिसका हम लोग भारत से बहुत सारे लोग हैं जो हिस्सा है और उसमें काम कर रहे हैं to run this movement of open educational resources. And the final milestone is 2019 recommendations on open educational resources OER 2019. 2019 में यूनेस्को ने ये रिकमेंडेशन जारी की है, and India is also one of the signatory of this recommendation. The need of open educational resources. This is the history or a development of open education movement and open educational resources. Now, what is the need of open educational resources? इसकी जरूरत क्या थी? भारत में शायद इसकी जरूरत नहीं महसूस की गई क्योंकि हमारे यहाँ जो कॉपीराइट्स लॉज है और जो हमारा कल्चरल बैकग्राउंड रहा है शिक्षा के संदर्भ में वो डिफरेंट काइंड का था. तो हमारे यहाँ जेरोक्स मशीनें गली गली में कॉलेज यूनिवर्सिटी के सामने दिखती है जो कि यूएस में वगैरह या यूरोप में पॉसिबल नहीं. Because of that, the low availability of good quality educational material, and second is the cost of access in many locations in a very high and increase each year. Dr. Mahesh, may I please? 2000 के पहले शायद भारत में Dr. education Mahesh, की cost. excuse me, sir. Sir, may I just request you to kindly wind up within 5 minutes as the resource person for session 2 is already there. Yes, madam. Yes, madam. No problem. 5 minutes. So the need is low availability, then cost of access in many locations is high, lack of inclusive and equitable quality education, and lifelong learning is an essential part of 21st century. So in this context, open educational resources are very important and needful. There are a number of benefits, but you people can go through my presentation and that will be helpful to understand the thing. Let's check your learning. I skip this activity. Challenges, you can go through the presentation and see. The key takeaways from these sessions are OER are digital as well as non-digital educational material. This is the thing we have to remember. Then OER are a subset of open education, open access, journals and open courseware. Also, open education provide access to quality teaching learning material, TLM. Then open educational resources and the open movement have recently evolved after 2000. And there are a few challenges like lack of access to digital devices and the internet, lack of digital skills to find appropriate open educational material over the internet. So my last appeal is be open, share your knowledge and resources with others for a better world. With this appeal, I am concluding this session. These are the references that are definitely helpful for you. Thank you very much. If you wish to join and to further open education and OER, please don't hesitate to contact, collaborate. Welcome. I personally welcome you to join our hands to spread educational resources
openly. Thank you very much. This is from my end. Thank you, organizers, for giving me such a wonderful opportunity to interact this large number of participants. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. It will be really nice if you If could anyone share. have a question, I know I haven't time to take questions, but still there is a 1 minute. So if anyone have question, I would like or love to respond this question. So we'll really appreciate if you could share your presentation so that we can share it in the group with this. Yes, I will share it. No problem. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir, for this elaborative session on the introduction to open educational resources. We from G.H.G. Khalsa College of Education and our collaborative institutions extend our heartfelt gratitude to you for taking the time to be with us today. Sir, your expertise and insight has undoubtedly left an indelible mark on the minds of our participants, sir. Thank you so much, sir. Now moving to session 2, we are having amongst us Professor Dr. Anshu Radha Agarwal, who is a distinguished academic professional and is serving as the principal and professor at KIIT College of Education. Dr. Agarwal's remarkable career spans over 27 years, during which she has made substantial contributions to both teaching and research. Dr. Anshu's impressive achievements and her commitment to advancing education make her a valuable asset to the academic community and beacon of inspiration for educators and researchers alike. Today in this session, Dr. Anshu will be deliberating on the topic tools and techniques for creating open educational resources. We welcome you, ma'am. And over to you. Thank you, ma'am, for the introduction. I really appreciate that you have invited me for this session, educational open resources. So today, as the Dr. Mahesh has wonderfully defined about the educational open resources, so what is the educational open resources? So it means you know that now it is clear what is the OER, Open Educational Resources, which is freely available or accessible for everyone. That is called the Open Educational Resources. But he told that he told about the definitions, and he also told that what is the legal licensing of these type of the resources. I just want to give an example कि licensing जो legal licensing है इस पे वो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि if you see that if you are going to use the PPTs from the internet, then you see that there are the slideshow, but you cannot download that PPTs. आप उसको यूज कर सकते हो, पढ़ाने के लिए यूज कर सकते हो स्लाइड शेयर्स को, लेकिन आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते. तो इसका मतलब क्या है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, सो दैट यू शुड नॉट सेल ऑफ इट टू द फर्दर. तो लेकिन कुछ में रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं होती हैं, बट यू कैन यूज इट, यू कैन एडिट इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. So these are called the open educational resources. But today in my session, I just want to tell you that how to create this type of the material, educational material. आप जो एक्सेस कर रहे हो मटेरियल को, लेकिन हमारी ये this is our responsibility as a teacher that we should create some good material for everyone. तो अगर if we want to create some material for the open education resources, that will be great for the teachers. That will be very beneficial for this country. So today in this session, I will tell you that what are the tools to create the educational open resources. So there are different tools, as you have seen at the time of the pandemic. Online teaching tools were used. So many teaching tools were used. That is called the ICT tools. तो ICT टूल्स बहुत तरीके से यूज हुए हैं और बहुत सारे टीचर्स को पता भी है कि हाउ टू यूज द ICT टूल्स. सो लेट मी शेयर माय प्रेजेंटेशन फर्स्ट. Kindly allow me to share my presentations, ma'am.
co-host. Yes. My screen is visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, yeah. Now you can see ICT and AI tools and techniques for the open educational resources. So in this session, I will tell you that how to create the open educational resources by using the ICT tools and AI tools. AI means artificial intelligence tools, which is very recent nowadays. So first of all, I will talk about the ICT tools, जो कि सब लोगों को बहुत कुछ पता भी होगा. Like if you are taking different ICT tools like Google Classroom, Google Docs, if you are taking like Google Forms also, there are so many ICT tools related to the Google, and other ICT tools like Testies for lesson planning, for Nearpod, and different, so many ICT tools were there. But nowadays, we are using AI tools, which is very much updated tools that should be used by each and every teacher. So in this session, I will tell you that we have used so many tools like Google Slides, Google Docs, Testies, Canva. Even we have nowadays we are using Canva also. We are using YouTube and social media also, like Dr. Mahesh has given the example of the Reels also. So we are using so many tools to teach in the teaching and learning. But these are the ICT tools which we have already used. And I hope कि आप लोगों को इस बारे में पता भी होगा. Like Google Slides है, which is the creative and interactive presentations to engage the students and facilities in collaborative learning. Google Slides को हम use करते हैं collaborative learning में. Test Teach is a lesson planning tool in which you can create so many lessons by using the multimedia, by using the YouTube, by using the images, and so many things you can use through the Test Teach. Google Doc is a document where you can edit the documents, you can make the documents, and you can share the knowledge with others. Canva is a platform where you can make the slides, infographics, and posters, and so many things you can prepare on the Canva. YouTube, you know all that you can make your videos, educational videos, and you can share it with others. Social media like Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, and you can collaborate with the others. So these are the ICT tools which can be used in the open educational resources. But nowadays, so many AI tools has been launched. Like I will discuss here the educational co-pilot here. I will tell you that how you can use it. So first AI tool is the educational co-pilot, in which you can create lesson plans, you can create presentations, you can make interactive quizzes also. So this is a platform where you can prepare so many things, and that is very easy for the teachers, and it will take few minutes only to make all these things. Second is the Learn Word. Learn Words is a tool, AI tool, through which you can create your courses. So I want to tell you that whenever you are preparing the material like lesson plan, presentations, and PowerPoint presentations, and quizzes, etc., and these are the content, these are the teaching material only. But when you are creating a course, full course, in which you are including all the modules, all the units of the lesson plan, you are putting videos there, PDFs material, and you are taking so many quizzes there, assignments there, then you are going to create a full course. So that will also include in the open learning materials. So in this session, I will tell you, so tools and techniques is clear to all of you that what are the tools to create the material. But in this session, I will tell you a few tools. I cannot describe the all the tools, but one or two tools I will tell you that how you can create the teaching material and how can you create your course, full course for the
OER. So I'm going to demonstrate you a tool. Yes, my screen is visible, Google? Yes, ma'am, it's visible. Okay, so the tool which I'm going to tell you, the name is the, it's an educational co-pilot. Okay, so first of all, you will go on the Google and then you will type here the education co-pilot. Okay. Lesson plan, you can also. Okay, so you will see the link here, the education co-pilot AI lesson planner. So you will click on it. Yeah, this is the interface. Now you can see here is the on the top right hand side login and sign up. So here you have to first log in with your Gmail ID. So I am going to log in it. Okay, so this is the interface of the co-pilot when you will log in with your ID, because I have already logged in with my ID. So you have to log in with your ID. Then you will see this will be the interface of this site. Now here you will see there is a dashboard. It's a dashboard, then unit planner, and then workshop, and then history. Okay, now first of all we will go on the, you can see we will go on the workshop. Okay, now you see there are so many things you can prepare with this tool AI. Here is the you can see there is a quiz builder, lesson planner, educational handout, PowerPoint generator, context builder, idea generator, AI freestyle, real world benefits. So there are so many things which you can prepare. So first of all, I will tell you that lesson planner. The third one is the lesson planner. You will click on it. So now you can write here any topic or lesson, like suppose I want to prepare a lesson on the industry. Okay, now you have to mention here grade also. Okay, suppose 10th grade I have done. Now generate. So it's working, just wait. It's going to create a lesson plan content for me. So wait for this, net is very slow here. So what we have to do, first of all, we have to log in on the educational co-pilot. Yeah. I think you are able to see the lesson plan, full lesson plan they have given. Aim, objectives, possible material needed, anticipatory set, practice, everything they have given, the guided practice and independent practice. Okay, they have given all the activities also which you can define to the students related to the industry, like independent practice, ask student and something what you can do. So they have given the full lesson plan here. Now this is a lesson plan in front of you. Now you can edit
this has a belt is given to edit this lesson plan. If you want to change the text or you want to include some other things in your lesson plan, you can do it. So in this way you can prepare your lesson plan and you can download it. Now going back, if you want to make a quiz builder, then you will go, I'm going to click on the quiz builder. Here you have to write the name of the quiz. Okay, so quiz name वही हम लिखते हैं, इंडस्ट्री. थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दे कि हमें क्विज किस पर चाहिए. टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, सपोज. So we will click on let's get started. Okay. Okay. Now you can see there are the question and answers. Export to PDF and click to share. पहले हम export to PDF करते हैं. क्या है? देखो ये हमने डाउनलोड किया and you can see quiz is there. Yes, it's creating. Okay, कुछ गलत हुआ इसमें. Just check it. Check it. No, it's working. I think all the questions will come here. It's working. ओके. थोड़ा हमने इसमें गलत किया है. यहाँ पे देखिए कि ये जो है, ये हमारी जो दिए हुआ है क्विज बिल्डर में, इसमें थोड़े से हमें कमांड देने पड़ेंगे. हमें क्या क्या चाहिए? मल्टीपल चॉइस चाहिए, तो वी हैव टू चेक इट. ओके. एंड अगर हमें ट्रू और फॉल्स चाहिए तो हम उसको चेक कर सकते हैं. रिस्पॉन्सेज जैसे भी चाहिए वो हम इसमें थोड़ी सी सेटिंग करेंगे, तो इट विल जनरेट ऑल द क्वेश्चंस. ओके, लेट्स एक्सप्लोर द अदर थिंग्स. आई डोंट नो कि इसमें क्या हो रहा है, लेकिन हो जाता है ये क्विज. दोबारा से हम करेंगे तो ये आ जाएगा. Ma'am, is it that we need to generate the questions after we choose? उसमें जनरेट का कोई टैब आ रहा था क्या? Yes, ma'am, नीचे था. एक मिनट, शायद मैं वो उसको रह गया है, उसको क्लिक करना. मैं देखती हूँ दोबारा से. यहाँ पे हमने क्विज का नाम दिया टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके. जनरेट वाला कहाँ है इसमें? हाँ, जनरेट 5 क्वेश्चंस ये लिखा हुआ है यहाँ पर. यस यस. लेकिन इसमें आपको ना ये देना पड़ेगा इंस्ट्रक्शंस कि आपको क्वेश्चंस किससे रिलेटेड चाहिए. लाइक मुझे चाहिए टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. हिंट दे रहे हो क्वेश्चन बनाने वास्ते. Yeah, you have to give the hint. Then we can generate questions. Grade level. Grade level. Level it is. Something wrong. हम थोड़ा दूसरे वाला एक्सप्लोर करें इसका, बिकॉज आई डोंट नो कि ये क्यों नहीं जनरेट कर रहा है, लेकिन हम दूसरा चीज देखते हैं इसका.
Okay. Now, if you want to create some educational handout, that can be created very easily here. You have to like handout should cover जो भी आपको टॉपिक चाहिए वो आप यहाँ लिखेंगे इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर साइंस कोर्स ऑनलाइन प्रोग्राम कोर्स जो भी आपको जनरेट करना है like tools and techniques for creating online program course to generate like it is generating, taking time. So these are the AI tools through which teachers can create so much material within few minutes. So देखो ये आ गया है tools and techniques for creating open educational resources, handout cover सारा आ गया है. So all has been done by through AI within minutes. अगर आपको इसमें कोई कंटेंट ठीक नहीं लग रहा है तो you can edit it according to yourself. So it means the AI is giving a framework for all the things. Like जैसे कि उसने लेसन प्लान का हमें फ्रेमवर्क दे दिया, हैंडआउट्स का दे दिया, क्विज का दे दिया, सारे हमें एक फ्रेमवर्क दे दिया है. Now you can edit according to your requirement. So it makes the teacher's life very easy. Okay, so these are the tools and techniques through the AI through which you can make the lesson plan and even idea. You can see there is the idea generator. Idea generator means whenever you are going to prepare any lesson, कोई project है, कुछ भी है, so they will give the idea. You can explore all these things yourself, and when you will explore you will find so many things, and then you can show your creativity. Teachers can show their creativity. It means this tool is giving the all the materials framework only, but आप लोगों को उसमें अपनी creativity लगा के उसको edit करना है और उस material को freely share करना है सबके साथ. So there is a project generator also. If you want to prepare any project related to any topic, you can prepare the project from here. And writing prompts, student reports बनानी है, parents को email लिखना है मान लो, तो वो भी ये इस वाले tool से आप कर सकते हो. So there are so many things the teachers can use this tool for making their teaching and learning very effective. अभी तक हम क्या करते थे कि जो आईसीटी टूल्स थे दे आर वेरी आउटडेटेड नाउ-अडेज बिकॉज वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क देयर. हमें क्या करना पड़ता था, हमें क्विजेस बनाने पड़ते थे, गूगल फॉर्म पे जाके क्वेश्चंस टाइप करने, तो इट टेक टाइम. यहाँ पर क्या है कि ये सारे क्विजेस वगैरह ये सब कुछ अपने आप बना के देना है. जस्ट यू हैव टू एडिट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. यू हैव टू शो योर क्रिएटिविटी. सो these tools makes the teacher's life very easy. So this was the tool which is related to the lesson plan, quiz, handouts, and everything. You can take the material from this tool. Second thing is you can also prepare your courses. I have launched my 2 courses on Udemy, International Udemy, and I have the students of 18 countries. Around 27,000 students have enrolled on my courses on the Udemy. So वो जो हमने courses बनाए थे, that was very time consuming. But nowadays, with the help of the AI, artificial intelligence, you can create your courses very easily. It means the AI will give you the idea that all the content online, and they will also give that the media's videos and PDFs, you can use it there. So I will give you the idea that how can you use this, how can you use these tools. So second tool is Learn Word. Learn Word course creation. Okay, so learnword.com. Yeah. So this is the online course creation, Learn Words. You will click on this link. Now you see this is the interface
of learn words. Okay. Now my screen is visible. Yes, ma'am. मुझे लगा शायद नहीं हो रही है. Okay, now get started free. Here you can see that get started free. That I will give you an idea that how can you create your courses. Okay, so here they are asking, take me to my school and start a new school. I think I have created my school. Let me check. Yeah, this school I have created. I don't know what the name is. So you can create your school like anything. Like I want to create my school. Create school. आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो यहाँ पर. Like KIT college. Education school. Create school. Now schools में अगर हम जाते हैं education. अच्छा वो कह रहा है the domain must contain any showcase letter. Okay, चलो ठीक है. जो ये स्कूल क्रिएट किया हुआ है हमने, इसी में चले जाते हैं. गो टू स्कूल. ठीक है, ये देखिए, दिस इज द इंटरफेस. यहाँ पे स्कूल का नाम लिख सकते हो. ओके, पासवर्ड वो कह रहे हैं कि कोई अच्छा सा पासवर्ड डालिए. यस, ये ले लिया इन्होंने. तो वी कैन सेव दिस पासवर्ड. इन दिस वे यू कैन क्रिएट. अब इसमें भी थोड़े आप सेटिंग कर सकते हो. इंग्लिश है, आपको कौन सी लैंग्वेज चाहिए, इंग्लिश चाहिए या कोई और लैंग्वेज चाहिए, जो भी आप जिसमें भी आप बना रहे हो. तो वी आर टेकिंग इंग्लिश एंड या टाइम, ये सब चीजें आप सेट कर सकते हो. देन नेक्स्ट. ओके, स्कूल का कोई टेम्पलेट आप यूज कर सकते हो. सपोज आई एम यूजिंग दिस वन. ओके, इसके बाद थोड़ी सी ये चीजें पूछेगा. व्हाट डू यू वांट टू अचीव विद लर्न वर्ड. क्या करना चाहते हो. I want to sell online course. I want to train employee. I want to offer free training. Like I'm going to click it. What is the size of your audience? अच्छा, पहले are you currently teaching online? Yes, I am teaching online with another platform. I am currently teaching, but I am teacher. Whatever you want, you can write here. I want to start teaching online.
व्हाट इज द साइज ऑफ योर ऑडियंस, आप वो डाल दोगे, सपोज 1000. व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स योर रोल, यहाँ पर ये यू विल सी सो मेनी ऑप्शंस आर देयर. सो यहाँ पे आप देख सकते हो. कॉलेज एंड हायर एजुकेशन, ये हम इसमें फिनिश. बिल्ड योर स्कूल. ओके, अब आपका स्कूल ये पूरा क्रिएट हुआ है. नाउ यू सी द इंटरफेस. स्कूल विजार्ड, क्रिएट योर फर्स्ट कोर्स, बिल्ड योर लैंडिंग पेज. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हम ये यहाँ पे कोर्स बनाएंगे. सो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड पे कोर्सेज पर जाइए एंड क्रिएट कोर्स. सी, नाउ यू हैव टू राइट ए टाइटल ऑफ योर कोर्स, जो भी जिसके ऊपर भी आप कोर्स बनाना चाहते हो. लाइक मैं बनाती हूँ ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑफ AI tools for teaching. यस, यहाँ पे आपका ये नेक्स्ट आ जाएगा. इसके बाद वो कहता है कि ये आपको डोमेन रहेगा ऊपर का. ठीक है, इसको शॉर्ट करना चाहते हो वो शॉर्ट कर सकते हो आप. उसके बाद ये पूछ रहे सिलेक्ट द एक्सेस टाइप ऑफ योर कोर्स, मतलब आपका जो कोर्स है वो आप पेड वाला रखना है, आपको ड्राफ्ट रखना है, कमिंग सून, फ्री. तो हम इसको फ्री रखते हैं बिकॉज वी वांट टू गिव इट फ्री. ओके, अगर आपको पेड वाला रखना है तो उसमें फिर वो सारी चीजें सेटिंग करनी पड़ेगी कि हाउ मच अमाउंट यू वांट टू पुट इट. तो हमें अभी फ्री वाला करते हैं, फ्री हम रखते हैं इसको. देन नेक्स्ट. ओके, हियर यू कैन अपलोड योर कोर्स. कोई भी कोर्स का अगर आपको कुछ अपलोड करना है वो आपने डेस्कटॉप पे रखा होगा, उसको अपलोड कर सकते हो. जस्ट लाइक मैं आपको बताती हूँ, सपोज मैं इसको अपलोड करती हूँ. मैं यहाँ की उसमें से कुछ ना कुछ ले लेती हूँ. डिजिटल लेसन प्लान इमेज ले लेती हूँ मान लो, या ऑनलाइन कोर्स फॉर द कंटेंट डेवलपमेंट ये ले लेती हूँ. या नाउ अपलोड. ओके, अब यहाँ पर नीचे कह रहा है कि इंसर्ट इमेज. या ये हमारे कोर्स के अंदर ये इमेज आ गई है. नाउ यू कैन सी. अब इसको हम आगे करते हैं. नेक्स्ट, डिजाइन योर कोर्स पेज, क्रिएट द कोर्स कंटेंट, बिल्ड द कोर्स कंटेंट्स विद AI. ठीक है, आपको ये भी इसमें भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बट मैं सीधा बिल्ड द कोर्स कंटेंट विद AI पे जाऊंगी. ओके, अब AI जो है ये पूरा कंटेंट बना के लेके आएगा आपके लिए पूरे कोर्स का. सी, ठीक है. Now you can see online training of AI tools for teaching, type of learning activities to be used in your. वो कह रहे हैं कि now you have to choose which type of the medias or the contents you want to include in your course. So see, multimedia I have checked, videos चाहिए मुझे, suppose मुझे e-books भी चाहिए, मुझे PDF भी चाहिए, तो हम इसको क्लिक कर देंगे. ऑडियो चाहिए तो ऑडियो को कर दो. इधर से असेसमेंट में वो कह रहा है कि एग्जाम्स चाहिए या गूगल फॉर्म्स चाहिए या सेल्फ असेसमेंट चाहिए, लाइव सेशंस चाहिए, तो वो भी आप उसमें कोर्स के बीच में क्रिएट कर सकते हो. सर्टिफिकेट चाहिए तो सर्टिफिकेट भी, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन हम ये कर देते हैं. तो जो भी आपको अपने कोर्स के अंदर इंक्लूड करना है वो आप चेक इन करते जाओ.
इसके बाद भी बहुत सारी सेटिंग है, जैसे सेट द नंबर ऑफ सेक्शंस आपको सेट करने हैं, नंबर ऑफ एक्टिविटीज सेट करनी है, वो भी आप इनको खोल खोल के आप सेट कर सकते हो। अभी मैं इसको आगे फर्दर चलती हूँ। जनरेट, so AI is generating the full content. Yes, you can see all the modules has been created by the AI. So first is the introduction, then this is understanding AI tools for teaching, exploring AI tools, implementing AI tools in teaching, evaluating AI tools, conclusion. तो ये पूरा हमें उसने कंटेंट दे दिया है, बट इससे भी ज्यादा अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं इसके अंदर. Now at the time of creating, you will see there, जैसे सजेस्ट न्यू एक्टिविटी आप करोगे इंट्रोडक्शन में नहीं करते, चलो सेकंड वाले, अंडरस्टैंडिंग एआई टूल्स फॉर टीचिंग, इसमें सजेस्ट न्यू एक्टिविटी आप करोगे तो इसको क्लिक करिए, देखिए वो और चीजें लेके आएगा. ओके, नाउ इधर की साइड आप ये देखिए कि यहाँ पे है चेंजिंग एक्टिविटी. देखो इसमें आप ये बहुत सारी चीजें आ रही हैं, आप इसमें ई बुक्स ऐड कर सकते हो, वीडियोस ऐड कर सकते हो, पीडीएफ ऐड कर सकते हो, ऑडियो, लाइव सेशन, कुछ भी जो भी चाहो आप वो अकॉर्डिंगली इस वाली यूनिट में ऐड कर सकते हो. इसी के पास ये सारे के सारे वो हैं, और अपने आप ये कोर्स को आप बनाते चले जाओगे. एक्सप्लोरिंग एआई टूल्स है, ठीक है, इसमें आप जस्ट न्यू एक्टिविटी करिए. ओके, इसमें आप यहाँ पे आपके पास ये बटन है, यहाँ पे ई बुक्स, वीडियो, सेम वे में आप कुछ भी आप इसमें ऐड करते जाओगे और ये आपका कोर्स जो है पूरा बनता जाएगा. इन दिस वे यू कैन क्रिएट योर कोर्स. तो इट मीन्स व्हाट AI have done here. It means when you are going to create a course, you have to work a lot. आपको आउटलाइन आप पहले अपना उसका मॉड्यूल्स आपको डिसाइड करने होते हैं, उसके आउटलाइंस डिसाइड करनी होती है, एंड यू हैव टू डिसाइड सो मेनी थिंग्स. अब क्या है कि इसने सारा आपको फ्रेमवर्क दे दिया पूरा कि ऐसे ऐसे आप मॉड्यूल्स बना सकते हो, उसमें ये कंटेंट रख सकते हो. ये कंटेंट नहीं रखना है तो आप अपना भी कंटेंट इसमें डाल सकते हो. उसके साथ साथ आपको जो भी इसमें मटेरियल डालना है, वो वीडियोस डालनी है, ई बुक्स डालनी है, व्हाटएवर इट इज, वो सब इसके अंदर आप हर मॉड्यूल में अपलोड कर सकते हो. इन दिस वे यू कैन क्रिएट योर कोर्सेस. ओके, सो जब आप ये क्रिएट कर लोगे कोर्स, तो यहाँ पे आपका ये इंसर्ट कंटेंट हो जाएगा. ओके, ये सारा आपका कंटेंट जो भी आपने वीडियो, मैंने अभी इसमें डाला नहीं है कुछ भी, लेकिन जो भी होगा वो आपका इसमें इंसर्ट हो गया है, एंड इट विल लुक लाइक दिस. ओके, नाउ ऊपर की टैब देखिए आप, इफ यू वांट टू सी योर कोर्स, ये इट्स ए प्रीव्यू कोर्स. ठीक है, इट्स ए प्रीव्यू कोर्स प्लेयर एंड कोर्स इनसाइट. तो प्रीव्यू कोर्स ओवरव्यू, प्रीव्यू कोर्स प्लेयर देखते हैं. See, when students will access this course, so it will look like this. Here they will go for the course introduction first, then they will go for the understanding AI tools like this. एक one by one they will go, because मैंने अभी इसके अंदर कुछ डाला नहीं है इसलिए कुछ आएगा नहीं. When you will put something here, so that will come here. So in this way you can create your courses very easily. So this is the way through the AI we can make so much teaching and learning materials by using our creativity. Okay, like चीज और बताती हूँ. So if you want to ask something, अभी तक जो मैंने बताया, you can ask, then I will go further. Ma'am? It's clear, ma'am. It's clear. It's clear to everyone? Okay, no question. So I told you the two AI tools through which you can create courses, and another one is you can create you can create the materials, lesson plan and PPTs, or and other things also.
एंड सेकेंड थिंग, एक AI का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, which is very much useful for everyone, that everyone always make the PPTs. When the teachers goes in the class, they have to prepare the PPTs. But here the AI has launched a tool through which we can prepare any type of the PPT with videos, with the images and everything in a single click. So I can tell you that app is Gamma.app. Gamma.ai, sir. Yes. Gamma.app. This site name is Gamma.app. Then you will go on the Gamma.app. You can see this is here also you have to log in with your Gmail ID. Then you will see this is the interface, and I have prepared these PPTs. Now I will make the new one PPT within a minute. You can see how it is possible. So here is the create new. I'm going on the create new. Here you can see you can generate the PowerPoint presentation, and then this is the next thing that you can prepare the document, because we have to prepare a PowerPoint presentation. So we will click on it. So you can see there is the presentation, document and web page. You can prepare presentation as well as document, जो कि OER का ही part है, and you can also prepare your web page also within the minutes. AI will make it with the proper prompt. You know what is the prompt? Prompt is the language which we are giving to generate something through the AI. So prompt should be very clear. So now we will go on the presentation because we have to prepare a PowerPoint presentation. So we will click on it. You can see there is a type, a topic in any language. So we will type here. Suppose we want to prepare the PPTs on industry, same. Industry. Now we will click on it. See, now the AI has given the content on which they will prepare the PPT. And now we can review this content. ये कहते हैं कि major sector in the industry, trends and challenges, key players. These are the content that will be covered in the slides. But we can change all this. If we don't want this regulatory landscape, we can remove it here, and we can put our content like we want. Manufacturing industry, जो भी है. If you don't like this content and you want the another type of the content, then what you can do, you can try again here from this tab. Okay, now they have given the another content. What is the industry, key players in the industry, trends and marketing. फिर भी आपको पसंद नहीं आए, then you can again try it, and you can remove anything. Okay, so suppose I like this content. Now I will go continue. Okay, now these are the different templates. You can choose any one template which you want in your PowerPoint. अब आप जिसको भी चाहते हो आप वो वाला ले सकते हो. Suppose I like it. I'm going to choose this template. Now go continue. Now the AI is making slides. See the magic. All the slides they are making. Okay.
देखो ये सारी स्लाइड्स इसने एआई ने हमारे लिए बना दी है. नाउ दीज आर द स्लाइड्स, दीज आर नॉट द फाइनल स्लाइड्स, दीज आर द फ्रेमवर्क जो कि हमारे लिए एक एआई ने काम करके दिया है. नाउ you can edit these slides according to your requirement. अगर आप इसमें कुछ एडिटिंग चाहते हो आप एज इट इज भी बढ़ा सकते हो इफ यू वांट, इफ यू डू यू डोंट हैव टाइम. बट अगर आप इसके अंदर कुछ और भी वीडियोस डालना चाहते हो और इमेजेस डालना चाहते हो, that is also possible. So you can see there, these are the tabs at the right hand side corners. आप ये देखोगे कि यहाँ पे ये टैब्स आ रहे हैं. तो लाइक इफ यू वांट टू यू हैव टू सिलेक्ट द स्लाइड, जिसमें भी आप चेंजेस करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करोगे. और जैसे आपको टेक्स्ट चेंज करना है तो आप ये सेकंड वाले पे जाओगे, टेक्स्ट ए. इसमें आप कोई भी टाइटल हेडिंग जो भी चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो. सेकंड आपका चेंजिंग का है, आप कोई बॉक्स इसके अंदर लाना चाहते हो, दैट कैन बी पॉसिबल. आप इसमें टेबल्स कॉलम्स कुछ भी डालना चाहते हो, दैट कैन बी पॉसिबल. कोई फॉर्म में आप लेना चाहते हो लाइक दिस वर्टिकल टाइमलाइन, वर्टिकल नंबर्ड कुछ करके लेके आना चाहते हो, वो भी पॉसिबल है. इफ यू वांट टू ऐड एनी इमेज, दैट इज पॉसिबल इन ईच एंड एवरी स्लाइड. उसके बाद यूट्यूब वीडियो मान लो आप कोई लेके आना चाहते हो तो उसका यूआरएल लिंक ये मांगेगा. जैसे मान लो मेरे को यूट्यूब वाला बता देती हूँ मैं आपको. वैसे तो इसमें बहुत सारी इमेजेस सब चीजें डली हुई हैं, बट जैसे मान लो इसमें मेरे को यूट्यूब लाना है, तो मैं ये यूट्यूब पर जाऊंगी. ये देखो यहाँ पे ये बन गया है बॉक्स. अब नाउ एज soon I will insert my URL of the YouTube, then that YouTube video will automatically come in my slide. So what I have to do now, I will go on the for the URL, I will go in my YouTube channel, YouTube video, sorry. Okay. सपोज मुझे किससे चाहिए, इंडस्ट्री से रिलेटेड चाहिए, जो भी था आपका मटेरियल जिससे भी रिलेटेड आपको चाहिए. मैं यहाँ पे डालती हूँ कोई इंडस्ट्री. हो गया. Industry. Suppose I like this video. I want to insert this video. Hello everybody, this is the इसका जो URL है, now you will copy it and paste there. Control C. Then you will go in your presentation. This was my presentation, and you will paste it here. Okay. Now you will see this video has come in your PPT. So in this way, you can put your PPTs or images. You can put videos, images, and everything in your slides. So these are the tabs. Now, the main important part is that your presentation is ready. Now, what you can do, you can present it here from here. But if you want to bring it in your PPT, then you will go here, share, and then you will go on export. So as soon as you will click on the export, they will ask export to PDF, export to PowerPoint. Because अगर आपको PDF में चाहिए तो ये PDF में हो जाएगा, और अगर आपको PowerPoint में लेके जाना है इसको और उसमें फिर से और भी एनिमेशंस वगैरह डालने हैं तो you can export to the PowerPoint also.
Okay, so as soon as you will click it, it will go in your PowerPoint और उसमें फिर से दोबारा से आप एडिटिंग कर सकते हो, एनिमेशंस करना चाहते हो, कुछ और चीजें उसमें डालना चाहते हो, डिजाइनिंग चेंज करना चाहते हो, दैट विल बी पॉसिबल इन द PowerPoint प्रेजेंटेशन. बट एक्सपोर्ट टू PDF करोगे तो ये एज इट इज डाउनलोड हो जाएगा एंड यू कैन शेयर इट विद द स्टूडेंट्स. सो देखो यहाँ पे शेयर पब्लिसिटी है, इनवाइट अदर्स है, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन शेयर विद द स्टूडेंट्स and you can present it in your classroom. So these are the few AI tools which I have tried to describe you today in this 1 hour. But there are a lot of AI tools which can be through which you can make your teaching and learning very effective and very easy. So teachers are the very creative person, and if they are getting any framework from the side of the AI, they can improve so much. They can show their creativity and they can improve the teaching and learning materials, and they can share it with the public also. So this is all from my side. Now you can ask question, ma'am. Dear participants, if you have any question, you can ask now. The participant can now unmute themselves and ask question to the resource person regarding this session 2. If So any I have told the 3 AI tools today. First was the educational co-pilot, second was the learn words, and third was the gamma.app for the presentation. तो first वाला जो था आपका co-pilot, educational co-pilot, through which you can create so much material, lesson plan, quizzes, and handouts, and anything, and the projects also. And in the second tool, that was the learn words, you can create your courses. And third was the gamma.app, that was to create your presentation in few minutes. So these were the 3 things which I told you, and you can make your life very easy. If you want to ask any question. So dear participant, you are allowed to unmute yourself. You can unmute and ask the question to the resource person, or you can also type your question in the chat box also. If you are watching on YouTube, you can also type your question in the YouTube comment section. Ma'am, meanwhile, I have one question related to your session. Yes, That what type of license shall be produced by software for the courses created through the AI tools? You have given demo of one tool, that is Learn Words. I'm very curious to know that what type of licensing will be produced by that particular software when we will be creating a course on that particular software. Please. Yeah. When you are going to create any type of the course on any platform, not this AI, then you can share it with the students freely anytime. There is no need of the license. But if you are going to make it a paid version, then they require the license, and there are some formalities which you have to complete it. Okay, for the free version, it's freely distributed. Yeah, it can be freely distributed to the students. Okay, thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you, Professor Agarwal, for this immensely informative session, ma'am. Thank you so much. Now I would like to invite our worthy principal, Dr. Pargat Singh Garcha, for the formal vote of thanks. Over to you, sir. Thank you, Dr. Mini. As we have 2 sessions today, first was by Dr. Mahesh Koltame on the concept of OER, and the second session by Dr. Anshu Agarwal on the this topic which we were discussing right now. So we are really thankful to both the resource persons for sparing their valuable time to take these online sessions. We are really thankful, ma'am, to you and Mahesh sir for sparing your valuable time, as this is a collaborative effort. Many colleges are on one front, on one platform for this FDP. So we know that the NEP 2020 and the challenges in higher education are demanding these type of courses. We have to equip ourselves about the open educational resources and the online education. So it was really wonderful and really learning material you all have provided. Both the resource persons have given input on these 2 topics. First was the concept of OER
And then the second was the different tools related to teachers or the schools or the colleges, which we all can use. So we all have to understand that the time is changing at a very fast rate. We have to understand the speed of the time, and we have to go along with the time to make ourselves relevant in this fast changing world. Ma'am, it was really a brainstorming session, and we know the power of gamma, which can produce a PowerPoint within 40 to 50 seconds. And you can play with these AI tools if you know about these tools. I think many of the participants must have noted down all these three tools, and they must be enjoying with playing with these tools and producing good things for their students. So we are also very thankful to all the participants who have joined in this FDP from different colleges, and we are also thankful to all the principals and IQSC coordinators who have given full support to organize this program. And this is a collaborative effort. Every day, one college will be organizing one session. So we are learning from each other. Collaboration as well as the use of AI tools, and the very prominent aspect in educational arena nowadays, the open educational resources. So this is our first attempt, this 7 days FDP in the online mode. In the next phase, we are planning that we will be holding face-to-face sessions for creating courses. This is the first phase. In the second phase, we will go in this way. Thank you very much once again, Dr. Anshu Agarwal and Dr. Mahesh, for sparing your valuable time, and all the participants who have joined to this FTP through the Zoom platform as well as on the YouTube platform. So we are really thankful. On daily basis, we will be starting our session 10 minutes before 1 p.m. and we will try to compile the both session by 3 o'clock. 10 minutes for the question answering session. This was the first day. I request all the participants to prepare 1, 2, 3 questions, because when we will be interacting with each other, then we will be learning in a better way. So we expect a lot of queries in the next days, and so that we can learn so many things from our resource persons. So we are spending 2 hours, and our resource persons are giving their valuable time. So we will try to learn maximum things from the resource persons. So with these words, once again, big thanks to each and everyone on the stage or off the stage. जो फिर सामने आए भी हैं, जो सामने आएंगे, सभी का बहुत बहुत thanks. So with these words, we are completing today's session. Thank you very much to each and everyone. Thank you. Feedback link will be shared with all the participants, and it is already shared in the Zoom platform, and we will be sharing on with the YouTube comment also. So you can fill the feedback form. The feedback form is necessary for all the sessions for the certificate. A quiz will be shared at the end of the FDP. Minimum marks in that quiz are mandatory to get a certificate. So this is a minimum requirement: attending the session, completing the feedback, and getting a minimum marks in the quiz for a certificate. Thank you very much. Thank you once again for both the resource persons and all the colleges. Thank you very much.